What's up? Good evening. How you doing? How's this Saturday evening treating you? Yeah, हम लोग करने वाले हैं electrochemistry. We have done some really in detail theory session पूरा electrochemistry का. इस सेशन के डिस्क्रिप्शन में this one right here you have the playlist that has all of the theory of electrochem. उसके साथ हमने 2 PYQ सेशन भी किए थे, जे एडवांस के सवाल किए थे, बहुत सवाल किए थे, वो सब भी हैं. उसके अलावा वी हैव दिस सेशन फॉर यू. और कितनी तैयारी चाहिए आपको इलेक्ट्रोकेम के लिए? खैर, वी हैव गॉट यू कवर्ड. आई होप आप लोग एटलीस्ट एनसीईआरटी तो पढ़ के आए होंगे. या क्या? सो वी आर गोना डू सम वेरी इंटरेस्टिंग हैंड पिक क्वेश्चंस, अ कपल ऑफ जे एडवांस के सवाल, कुछ जनरल क्वेश्चंस हियर एंड देयर. या इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, राइट? एज यूजुअल हम लोग पहले एनसीईआरटी खोल के विल जस्ट गो ओवर थिंग्स दैट आई फील आर इंपॉर्टेंट, और कुछ चीजें जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली नहीं है बट एसोसिएटेड थ्योरी कुछ है जो जरूरी है जेईई में के लिए. विल एक्सप्लोर दैट. After that, we'll do questions. That's the way we do all these sessions. Khair, how are you doing? All comfortable with electrochem? या लगता है कि मुश्किल है? Let me know in the comments. कुछ स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ज्यादा मुश्किल लगता है बिकॉज भाई बहुत ढेर सारी थियोरी है, एंड टू डू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यू नीड टू नो thermodynamics, you need to know equilibrium, you need to know gaseous state, you need to know mole concept. और क्या कुछ बच गया क्या? इक्विलिब्रियम बोल दिया मैंने ऑलरेडी. सो दैट्स व्हाई इट गेट्स अ लिटिल, एंड यू नीड टू थोड़ा फिजिक्स भी, थोड़ा बहुत. वो फिजिक्स वाला पार्ट थोड़ा चिल है, राइट? व्हाट डू यू फील? हाउ डू यू फील? हाउ कॉन्फिडेंट यू फील ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अबाउट दिस चैप्टर? लेट मी नो. रेक, अगम, युवराज, सूर्या, प्रणाम. हेलो, लॉन्ग टाइम सूर्या. सो या, बाय द वे, as always, I have the links of all my sessions on here. Hold on, let me just put that in the chat if you guys want to see anything else that I've been generally up to. I keep updating this with whatever I'm working on. And hum log, where are we at? Hold on. We are here, December 16. This is where we are at. हम लोग ये सब कर चुके हैं. And we are now doing electrochemistry. We're going to do bonding next on Tuesday, so on and so forth. So before we start with the questions, as always, हम लोग करेंगे थोड़ा बहुत theory. Here comes the theory your way. Hey, hold on. ये वाला नहीं. हाँ, here is the theory. Namaste, good evening. Respect to you as well, Nidhi. Hey, Shlok, how you doing? Sujal, Soumya, चंद या चांद, क्या बोला जाए आपको? युवराज, प्रणाम. दीपक जी, बिल्कुल सब लोग आ गए. सही है. Very nice to see all of you here. All right. So, electrochemistry. Here's NCERT. We're going to go through this. Okay, बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, बट थोड़ा बहुत चीजें हैं जो बोलना जरूरी है. एक बहुत बेसिक चीज, बाय द वे, मेरे सर की जस्ट ऊपर है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज बोथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल को साथ में इलेक्ट्रोकेमिकल बोलते हैं. समटाइम्स स्टूडेंट्स थिंक द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मींस जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ये बहुत छोटी सी बात है, बट हो सकता है थियरी में कहीं पे आ जाए, तो बी केयरफुल अबाउट दिस. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? गैल्वेनिक सेल में बैटरी नहीं होती है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दीस थिंग्स इन नाइस ब्लू कलर. ओके, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर हो रहा है एंड हम लोग उसको जो है एक एक्वस सॉल्यूशन में आयंस को मूव करने का जरिया दे रहे हैं बाय कनेक्टिंग समथिंग इन द एक्सटर्नल वायर, बाय लेटिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्लो बाहर. सो बाहर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, अंदर आयंस फ्लो कर रहे हैं. आयंस फ्लोइंग चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग चार्ज, और सर्किट हो रहा है कंप्लीट, एंड यू कैन लाइट अ बल्ब और डू व्हाटएवर एल्स. खैर, this was the initial part of the whole galvanic cell thing, right? And look at NCERT. It goes from 0 to 100 very quickly. Look at this. It gives you these 3 diagrams. यहाँ पे है, मैंने कुछ लिखा हुआ है. I'll talk about that. And it says कि देखो, यहाँ पे मेरे पास रियोस्टैट है, और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम नॉट वॉल्यूम वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम करता हूँ, तब ये करंट जो है इस डायरेक्शन में जाएगा, और अगर बदल देता हूँ तो इस डायरेक्शन में जाएगा. Which is like what? If you're studying this for the first time, you're like, भाई हो क्या रहा है? What is this, right? Do you want me to go over this? Art, Pranam, how you doing? Chand, yeah, what's up? Do you want me to go through यहाँ पे, or are you comfortable with these 3 diagrams, or are they scary to you? मैंने कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हैं, कुछ हाईलाइट की हैं. I'll talk about all of them, but just tell me, ये जो 3 चीजें आपको समझ में आ रही है क्या हो रहा है, or do you want me to go over this? बेसिक चीज ये है कि कैथोड एनोड जो भी हो, साइन के ज्यादा जरूरी है कि डेफिनेशन दिस राइट हियर, दैट रिडक्शन हैपेंस एट कैथोड and oxidation happens at anode. I like this a lot, right? Red cat and oxygen, remember. Sign हम लोग बाद में देख लेंगे. Sign is not important. The direction of current will be figured out by sign, but सबसे ज्यादा जरूरी है reduction at cathode, oxidation at anode. So ये 1.1 volts क्यों लिखा है? Because जब मैं ये couple लेता हूँ, which is copper 2 plus being reduced to, यहाँ पे लिखा ऑलरेडी, बार बार क्यों लिखा जाए, राइट? कहाँ लिखा है ये देखिए, ये रिएक्शन 1 और ये रिएक्शन 2, इन दोनों को मिलाते हैं
तो spontaneous reaction gives you a potential difference at standard conditions as E not equal to 1.1, इसलिए यहाँ पे लिखा है greater than less than जो भी है. Yes sir, important, if it's important please tell. Okay सर थोड़ा समझा दो. Okay ठीक है, cool, let's go over this for just a minute, एक 2 मिनट के लिए देख लेते हैं. Salt bridge आपको मालूम है, I won't go through that. अगर if you want me to explain something in detail please tell me, I'm here for you. ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज और कॉपर हो रहा है रिड्यूस. क्यों? दिस इज इनसेन, राइट? मैंने जस्ट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला, जिंक सल्फेट में डाला, आई हैव जस्ट कनेक्टेड इट. मैंने कुछ फैंसी नहीं, आई हैव लिटरली जस्ट कनेक्टेड थिंग्स इन सॉल्यूशन और रिएक्शन हो रहा है. मतलब देयर इज अ टेंडेंसी फॉर सम रिएक्शंस टू हैपन, एंड by connecting two dissimilar things together, dissimilar metals in this case together, आप रिएक्शन को जो है होने का बढ़ावा दे रहे हो. That is what is happening over here. What reaction is happening? At the anode ये हो रहा है, this reaction is at the anode, this is at the cathode. How do I know? Because यहाँ हो रहा है reduction, right? और यहाँ हो रहा है oxidation, which is at the anode. Oxidation मतलब क्या है? Zinc gives Zn2 plus and electrons furnish हो रहे हैं. Here is a theory bit that's important. अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फर्निश हो रहे हैं. क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का बढ़ रहा है, सो इट गेट्स यू सम इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां से निकल रहे हैं देन दिस इलेक्ट्रोड मस्ट बी नेगेटिव. समझ में आया? इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं नेगेटिव, दैट्स व्हाई जिंक यहां पे दिया हुआ है एनोड है नेगेटिव. दिस इज ओके. कॉपर की तरफ देखिए, कॉपर एक्सेप्ट्स टू इलेक्ट्रॉन्स, बट इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? वायर से ही तो आ रहे हैं. These are electrons that are being accepted. If something is accepting electrons, it must be positively charged. इसलिए यहाँ पे लिखा है copper is positive. Cathode क्यों? क्योंकि the idea of reduction. Anode क्यों? क्योंकि idea of oxidation. And this is the sign over here. Now this is a spontaneous reaction. अगर मैं ऐसा करूं कि एक बैटरी लगा दूं उसमें, जैसे यहाँ बैटरी लगी हुई है, you'll notice what is happening. This is very interesting. देखिए यहाँ जो बैटरी है, ये बैटरी का देखिए बहुत छोटा सा है, बट हियर इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड हियर इज द नेगेटिव टर्मिनल. तो मैं उल्टे डायरेक्शन में एक बैटरी लगा रहा हूं. थिंक अबाउट लाइक दिस, राइट? इफ आई रिप्रेजेंट दिस होल सॉल्ट ब्रिज वाला रिप्रेजेंटेशन, ये भी एक बैटरी है जो ऐसे दिख रही है, और मैं एक और बैटरी उसके ऑपोजिट यहां कनेक्ट कर रहा हूं वेयर आई एम सेइंग ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट. सो इफ आई डू दैट देन देखिए क्या होता है. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मतलब उल्टा हो जाता है. नाउ लुक एट दिस, ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का. ओके, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड इसका ऑक्सीडेशन, इसका जो है रिडक्शन हो जाता है, इसलिए साइन बदल जाता है. शैल वी मूव अहेड विद दिस? इज दिस ओके? व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम हियर टू हियर? इतने जो है यहां से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और फिर नीचे जा रहे हैं. हो क्या रहा है? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और नीचे क्या हो रहा है? सो लेफ्ट वाला, दिस इज दूसरा कलर यूज करता हूं, बहुत ज्यादा ब्लू हो गया, राइट? लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर हियर. दिस इज स्पॉन्टेनियस एंड दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, व्हिच इज मेड स्पॉन्टेनियस, मतलब उल्टा रिएक्शन. ठीक है, यही हो रहा है यहाँ पे. दैट्स व्हाट दिस रियोस्टैट इज डूइंग. ये रियोस्टैट मूव करने से पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा है. दैट्स व्हाट दिस इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग दिस. ठीक है, ऑलराइट सर. 11 AM वाला सूट करता है टाइमिंग? अच्छा होमन जी, ठीक है, नोटेड. मुझे लगा आप लोग को 11 AM बहुत जल्दी लगता है, इसलिए मैं शाम को कर रहा हूं. ठीक है, ओके. मॉक देकर आए? अच्छा, तब तो बहुत भारी हो गया होमन. ओके. यू प्रेफर 11? आई विल ट्राई दैट नेक्स्ट टाइम अराउंड. खैर, गैल्वेनिक सेल हमने बहुत डिटेल में देख लिया, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइट, ये गैल्वेनिक सेल दोनों तरीके से. नाउ द मेन थिंग इज कि हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन होता है यहाँ पे, रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाफ होता है. इफ यू वांट टू गेट द सेल ऑफ द ई ऑफ द होल सेल, यू हैव टू कंबाइन बोथ ऑफ दीज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ठीक है, अगर हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं देन दिस डेफिनेशन होल्ड्स गुड. एनसीईआरटी में ये चीज बहुत लिखी हुई है बहुत प्यार से, but this only works if you're doing reduction potentials. If you do oxidation potentials, जो है बदल जाता है. Look at this. The E cell value has become ulta. Makes sense, right? यहाँ पे normal E cell is E cathode minus E anode when you have reduction potentials. If you have oxidation potentials, then it becomes oxidation of anode minus oxidation of cathode. Actually देखा जाए तो this is the real definition जो मेरे सर के just ऊपर है. E cell is E reduction cathode plus E oxidation anode. That's the real reaction. That's the real expression. खैर, और बाय द वे एक और चीज, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दैट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस, और इसके अगेंस्ट हम लोग वो टेंडेंसी को मेजर करते हैं. ये नंबर आते हैं उसी के, यू नो दिस, बट व्हाई इज इट जीरो? ये जीरो का क्या मतलब हुआ? दिस इज आर्बिट्ररी. ओके, दिस डज नॉट मीन कि हाइड्रोजन इज हैज इक्वल टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. यहां कोने में लिखा है मैंने 0.8 इज द वैल्यू दैट्स गिवन इन जेडीली की अप्रोक्सीमेटली अगर किसी का 0.8 है
then its reduction and oxidation are मतलब दोनों की टेंडेंसी सेम है. सिल्वर है तो मतलब सिल्वर भाई साहब कुछ भी करेंगे, या तो ऑक्साइड होंगे, रिड्यूस होंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टू नो. और यू नो दैट दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट? हाइड्रोजन, राइट? अगर आपको मेटल को रिड्यूस करना होता है देन यू यूज हाइड्रोजन एज अ गैस, या तो कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन. वो मेटलर्जी में पढ़ा था, मे बी अभी मेटलर्जी आपके सिलेबस में नहीं है, बट यू हैव एन आइडिया हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट. तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0 डज नॉट मीन कि भाई it is equally reducing and oxidizing. That is just an arbitrary number. ये जरूरी है. Artificial intelligence, प्रणाम, welcome, welcome, welcome. ठीक है? Okay, that was it about that. And on to Nernst equation. थोड़ा ऊपर कर दिया जाए, मेरे सर के just ऊपर है. Actually, I think I can take it to the other side. खैर, let's keep it like this. Okay, NCERT में थोड़ा बाद में पढ़ाते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को, बट मुझे लगा नर्स्ट इक्वेशन तो डिराइव होती है गिब्स फ्री एनर्जी से, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे पूरी चीज. क्या पूरी चीज? डेल्टा जी, दूसरा कलर यूज करते हैं, बहुत ब्लू हो गया ना. लेट मी यूज दिस ग्रीन हियर. ओके, डेल्टा जी इज डेल्टा जी नॉट प्लस आरटी एल एन क्यू. यू नो दिस फ्रॉम थर्मो. ओके, एंड यू राइट दैट बी माइनस एनएफ ई नॉट आरटी एल एन क्यू. व्हेन क्यू इज इक्वल टू के, तब होता है इक्विलिब्रियम, एंड दैट इज डेथ ऑफ सेल. ओके, ऑलराइट. खैर, एनीवे, इसको डिराइव करते करते यू डू वन थिंग, यू चेंज ln टू log एंड यू पुट अ फैक्टर ऑफ 2.3, और ये पूरी चीज 0.059 by n आ जाता है. नोटिस दैट ये जो बहुत जरूरी है कि ये क्यों है. व्हाई डू आई डू दिस 2.3 वाला फैक्टर? बिकॉज e पावर 2.3 इज 10. ओके, log लेने पे, इसलिए ln x is 2.3 times log x. f is 96,500 which is 1 mole of electrons. ज्यादा जल्दी हो गया क्या? सब ठीक है? everyone okay? Yeah, everyone all right? Let me erase this, okay, and ask you a quick question, ताकि सब लोग जाग जाएं. सब लोग जाग जाइए, जाग जाइए. या लीनियर इक्वेशन में बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया तो क्या आप कितनी, वाह वाह वाह, रद्दी वाला जी, रिमूव किया जाए इनको. लीनियर इक्वेशन, दैट्स अ फनी गाय. Students, behave like students. If you're going to behave like just common people on the internet, tell me, how are you different from everybody else? Have a bit of self-respect, if nothing else. Let's go ahead and see this. So, can you tell me this quickly? जो आपके पास फ्लोरीन है, right, F2, this has a very, very big E0 value, very, very huge positive value. What does this mean? Is this a reducing agent or is this an oxidizing agent? Please let me know this. Is this a reducing agent or is this an oxidizing agent? According to you, just let me know. You are awoken? ठीक है. बताइए इसको. Then is this reducing or oxidizing agent? What is fluorine? Is it a good reducing agent? Is it a good oxidizing agent? Okay, let me go one step back. Positive E0 की वैल्यू क्या? मतलब कि the forward reaction is spontaneous. If the forward reaction is spontaneous, that means that it likes accepting electrons. That means that it is getting reduced. If it is getting reduced, yes, thank you, Rick. If it is getting reduced, it must be a good oxidizing agent. Well, lovely. Well done. Very simple stuff. Very, very simple stuff. Yeah. Extremes में करो. You might think, अरे ये तो सबको मालूम है, ये तो सो के आदमी उठ के बता देगा. Absolutely. And whenever you have a doubt, look at the extreme. The extremes क्या है? Fluorine, और दूसरी तरफ extreme है lithium. Right? This is a good reducing agent. क्यों? Same logic से. And बीच में somewhere you have this. Now I've highlighted AgCl plus electron because this is a very weird thing. Let me थोड़ा बड़ा कर दे इसको. What is this whole thing? AgCl plus electron. This is metal insoluble electrode. अभी तक हम लोग बात कर रहे थे soluble electrode की. Now this is insoluble electrode. Soluble electrode मतलब electrode itself takes part in the reaction. जैसे कॉपर जो है मोटा हो जाता है, जिंक पतला होता जाता है, right? The electrode. Okay. How do I get this expression from these two reactions? एक तो सिल्वर खुद हो जाता है reduce, और दूसरा ये वाला expression of KSP. इन दोनों को आप ऐड करो. Now you see that this only depends on the concentration of Cl minus. Okay. This is a beautiful way of figuring out all these things. आपको लगता है calomel electrode मुश्किल है? That also you know figure out with the same thing. Calomel electrode भी आप ऐसी आइडिया से figure out कर सकते हो. It's just two different reactions. Okay. अगर कोई भी ऐसा metal insoluble electrode हो, so please figure this out and you'll be able to do this. JEE Advanced में भी आप इसको apply कर सकते हो. The same thing is there as well. Okay. All right. The next couple of ideas I want to talk about is this right here.
ये वाली चीज तो इज क्लियर राइट कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्यू एल एन क्यू में this whole ln q rt by nf ln q you should maybe do this as well. Just write the equation upside down left right so that you don't forget it ever. Khair, anyway, is l q is just the same as k but not at equilibrium. बहुत जरूरी कि q is not at equilibrium. So when you find out this value of e, you see that अलग अलग हम लोग कर रहे हैं oxidation and reduction half में. Okay. Now you will notice कि दोनों जगह I have put this in the denominator. Why have I put it in the denominator? Because in दोनों cases में this is still reduction potential. Okay. Although reality में anode में होता है oxidation, cathode में होता है reduction. I am accounting for that factor with this negative sign. कहाँ है negative sign? ये negative sign. This accounts for oxidation. Okay. So don't get confused with this. आप कौन सा formula use कर रहे हो? You need to know what formula you're applying where. Okay. So this accounts for oxidation. This negative sign right here. Any doubts on this, guys? Why is it that we do this? Please, ये theory बहुत जरूरी है. I know you've done this hundreds of times. आप लोग formula mark लगाना आता है. You're able to do questions. But do you understand negative sign का क्या मतलब है? And why is it that we are taking Q in this manner? Is this all right? कोई doubt है here? If you understand this, then you'll be able to do everything in, कोई भी सवाल आप नर्स इक्वेशन में कर लोगे. Okay. Sometimes in JEE Advanced, they will give you questions where they'll talk about oxidation potentials only and not reduction potentials. So डरना मत. Oxidation potential is negative over reduction potential. That's it. It's as simple as that. Why? Because delta G is a state function. E naught is it's not, right? It's an intensive property. And delta G is extensive, etc. etc. वो सब हम लोग कर सके. No sir, all cool. Okay. चलो स्पीड थोड़ी बढ़ाई जाए. Let's move on, right? Equilibrium constant का idea है कि K is equal to if Q is equal to K, then that of cell, etc. So you can figure things out. And ये हम लोग कर चुके हैं. We have covered this. The second part of this chapter has to do with R equal to the resistivity, conductivity thing, and all of that. We have done a lot of questions on this in the PYQ series. Please check these out. This is just direct theory. Yeah, R equal to rho L by A, 1 by R, G is equal to 1 by kappa times L by A. L by A is G star. Okay. I'm not rushing through this, but it's just that I feel that ये चीजें direct हैं. इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीजें नहीं है. It's just an application of one equation. And this is the second equation. Yeah, lambda m is kappa by C. Now the reason you have this factor of 1000 is because you're converting centimeter cube to liter, and centimeter cube is 1 by 1000 liter. That's all. Okay, तो इसीलिए यहाँ पे 1000 ऊपर आ जाता है. That's it. You can have units of meter square per mole as well. कभी कभी JEE main में ये units use होती हैं. Be careful if you have to convert that there. Lastly, you have this idea of, not lastly, एक छोटा idea और बाकी इसके बाद Kohlrausch law and all of that. Yeah. When you have strong and weak electrolytes में alpha goes close to 1 as concentration falls, and strong electrolytes are used to figure out the lambda naught values of all, okay, of weak from this. How do you do that? At infinite dilution, you assume कि सब बहुत दूर है. All of these ions are very, very far away. They don't interact with each other. If they don't interact with each other, they are additive. Okay, that's it. Last part of this has to do with there are equilibrium ideas. You can figure this out. We've done question on this. Last part has to do with batteries. As always, batteries are पढ़ लेना. Faraday's laws are one equation, just one. I know there are two laws, but practically एक ही equation है. Z is molar mass by E, which is not E, sorry, F. F, which is 97,500. 1 mole of electron ka charge, and N factor and IT. Wow, there's a lot of theory. We spent 20 minutes on theory. I do realize that. So I'm going to go ahead and start questions so that you guys don't get bored. If you want to cover some more theory, we'll come back to this NCRT. Okay. I feel like we spent a lot of time on this, so I'm going to go back to this thing. Okay. जितने लोग अभी बचे हैं अब तक 56. Let's start. You're back. Good to know, आदित्य. बहुत सही टाइमिंग. सवाल शुरू करते हैं. अगर और theory करनी हो, we'll go back to that NCRT. Choose the correct shorthand notation for standard reduction potential of the given reactions. शुरुआत में आ गया calomel electrode. It doesn't matter. Hg2 2 plus aqueous plus 2 electron gives you Hg liquid, not solid, liquid. Okay. Fe3 plus aqueous plus electron gives you Fe2 plus. Okay. इन दोनों का आपको लिखना है. Be careful about this. You're here. That's lovely, Shlok. That's lovely. Try this question out.
I think this is very doable. Just a matter of notations of standard cells कैसे लिखते हैं and all of that. ध्यान से पढ़ो, ध्यान से करो. Easy question. Easy question. Let's do this. Yeah. Let's start this off. Lot of theory. I know electrochem has a lot of theory, and then you're like, boss, इतना theory करने के बाद कितने सवाल बनेंगे? Yeah, it's a high effort, and maybe it's one of those chapters where if you want to get a really high rank, you'll probably do this chapter. If you are at a point where you want to clear JEE and you want to, you're happy with a 90, 95 percentile, 90, 95, you're like, electrochem thoda light low. But if you want to get that 99.5 plus percentile, you have to do electrochem, because this is where most people skip this. Okay, because I would say nahi hota hai. So if you're aiming for that, top 5,000 rank in JEE main or JEE advanced, then you got to do electrochem properly. Yeah, that's where I'm coming from. C. Okay, then, and there are tons of different questions. Yeah, man. Lot of different types of questions can come. Yeah. Rek and Shlok are both saying C. Okay, sweet. How do you guys say C? Let's see. क्या हो रहा है यहाँ पे? ये है Hg2 2 plus aqueous to Hg liquid. That's what I think. Why? Because यहाँ पे ये दिया है, ये है. You have to go from oxidized state to reduced state, right? Because that is standard reduction potential. Okay, make sure that the state is liquid. यहाँ पे दोनों तरफ aqueous है. So yeah, I absolutely right. Looks like C is correct. सही है. Simple सा question. In 99.8 plus, that's beautiful, Shlok. You're at the right place. Nobody trains students for 99.8 plus. I'm being very straight with you. Online nahi karte, but we do. That's our focus. That's our focus. The kind of questions we have for you, nobody else does. Let's do this. The values of E naught of some of the reactions are given below. Out of these, 4 options hai, and it's possible to have more than one correct option. So I have made the initial questions. पहला सवाल थोड़ा straightforward था. इसके बाद आप please ध्यान देके try करिए. This is very doable, okay? But do it slowly. This question is doable, but do it slowly. And JEE Advanced has questions like this. मतलब basically 3-4 चीजें ध्यान से देखने वाली. Yeah, it's one of those things. What am I checking for here? I've got E naught of a lot of these, and then सवाल और option में लिखा है I2 cannot displace Cl2 from KCl. आपको अंग्रेजी समझनी है, okay? अंग्रेजी समझनी जरूरी है, okay? Second वाला लिखा है FeCl3 plus, ये डायरेक्ट है, इसमें तो कुछ समझना नहीं है. Is a spontaneous reaction, मतलब E naught greater than 0. C4 plus will displace I2 from K. फिर से अंग्रेजी समझनी है. Fe2 plus reacts with Cl minus produce Cl2 gas. ये वाला थोड़ा डायरेक्ट है. This plus this gives you this. Okay. पहले और तीसरे में थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझने वाली चीज है. So let me know which options you think you are correct. I'll give you a hint on how to start. Let's take this guy. Will displace I2 from Ki. मतलब LHS में क्या होगा? LHS में होगा Cerium 4 plus or Ki. Be careful. What is this saying? Option C is saying Ce4 plus will displace I2 from Ki. मतलब LHS में आएगा Ki. And you're reacting that with Ce4 plus. So, shorthand notation, I'm just writing it like this. Yeah, Ce4 plus and I minus, ये हो गया LHS में, और RHS में होगा I2. And sure, और भी चीजें होंगी, but ठीक है, Ce4 plus होगा इधर तो होगा Ce3 plus होगा, sure. But that's not, doesn't matter. I need to see कि अच्छा ये reaction है. अब मैंने ये लिख लिया, then let us just check the E naught values. Is this spontaneous or not? बस, ठीक है. यही exercise आप करिए for all 4 options. Just this simple exercise you do. And then we'll see which ones are correct, which ones not correct. Shlok, lovely. B and C are correct. Okay, okay, cool. बाकी भी देख लीजिए. Shlok, can you do me a favor? Can you tell me LHS में क्या होगा? Shlok, सब में all 4 of them. Just do this. Just tell me what's on the LHS. Obviously, अगर आप LHS बता दोगे, RHS also is clear. And I'll go through that. I'll help you with that. B and C are correct with what you're saying. Thanks for that. Just tell me on the chat, Shlok, and anybody else who's brave enough to do this question. Tell me in the chat what is on the LHS according to you. और अगर RHS ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है, RHS बता दो, जो भी ठीक है, just let me know. Because that is the first step. After that, you can compare E naught values, right? Why do you need to know LHS में क्या है? Because सवाल थोड़ा सा convoluted है अंग्रेजी की वजह से, right? कुछ जगह बोल रहे हैं spontaneous reaction, कुछ जगह बोल रहे हैं इसको यहाँ displace करेगा, all right? In LHS is I2 and KCl. I2 and KCl. Okay, lovely. ठीक है, श्लोक. Option B तो पक्का सही है. ठीक है. Okay. Option B तो पक्का सही है.
तो चलो ऑप्शन बी नेक्स्ट लिख देते हैं, Fe3+ SN2+। हाँ, ये वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है, देख लेते हैं। और व्हाट डिड श्लोक से? श्लोक सेड LHS I2 and KCl, lovely, so I am writing it as I2 and Cl minus. I agree with you on these three things. चौथा क्या था? चौथा कौन सा वाला मिस कर रहा हूं मैं? लास्ट वाला क्या? हाँ, Fe2+ reacts with Cl minus to produce Cl2 gas. In D, LHS is Fe2+ and Cl minus. ठीक है, लिख देते हैं Fe2+ and Cl minus gives you Fe3+ and Cl2. Lovely. So, बाकी लोग जो चैट पे हैं, do you agree with जो अभी स्क्रीन पे लिखा है? Okay, I have just written down collectively जो युवराज और श्लोक बोल रहे हैं। बाकी लोग, if you are comfortable, you can let me know. और अगर आप you want to be passive, that's also fine. Yeah, if you guys don't say anything, I'm going to move on. So, this is a picture I formed. पहली बात हमने ये लिखी है, ठीक है। अब इन ऑप्शंस को हटा देते हैं। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। लेट्स रिमूव द ऑप्शन, आई डोंट केयर अबाउट द ऑप्शन। ऑप्शन मैंने लिख लिया यहाँ पे, एंड नाउ आई एम जस्ट गोना नंबर दीस गाइस। तो नाउ आई विल राइट डाउन कि भाई कैथोड में क्या होता है, एनोड में क्या होता है। ओके, लेट्स डू दैट। सो इफ आई पुट कैथोड ओवर हियर एंड एनोड ओवर हियर, लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं कैथोड और एनोड। सो 2 is greater than 1, या दैट्स व्हाट वी वांट टू डू, बिकॉज ये है रिडक्शन, दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड। उल्टा बोला, ये है कैथोड, ये है एनोड। सो इफ कैथोड इज ग्रेटर देन एनोड, देन इट्स स्पॉन्टेनियस, करेक्ट। अगर कैथोड की वैल्यू इज ग्रेटर देन एनोड, व्हाई? बिकॉज आई हैव गॉट टू डू कैथोड माइनस एनोड टू गेट ई सेल, राइट। सो इफ इज 2 ग्रेटर देन 1, या एब्सोल्युटली, तो पहला वाला हो गया सही। यू सी दैट, स्लो एंड स्टेडी, कैथोड एनोड। Do you see why am I comparing cathode and anode? Because E cell is going to be cathode minus anode. तो अगर ये वैल्यू होगी पॉजिटिव, then the reaction is spontaneous. तो looks to me like A should be correct. What do you think? आपका क्या ओपिनियन है? What do you think? I'm going to put a green tick next to it. अगर आपको लगता है सही नहीं है तो बताओ, I'll make it wrong. I'll put a red cross against it. But according to me, at first glance, it looks like this is correct. नहीं, ये तो करेक्ट नहीं है। हमने क्या बोला? रुको, one moment. Cathode 2 is greater than 1. उल्टा बोला मैंने यहाँ पे, बोला सही, लिखा गलत, लिखा गलत। Hold on, let me correct that here. ये हो रहा है, पूरा लिख लेते ताकि डाउट ना हो। ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, so this is the anode. ये हो रहा है रिड्यूस, तो दिस इज द कैथोड, राइट, एंड 2 इज द कैथोड। तो लिखा सही था, यहां पे ऊपर गलत लिख दिया। सर 2 में Cl इज ऑक्सीडाइज, सो वुड द वैल्यू बी नेगेटिव? चलो, यू आर कन्विंस्ड अबाउट 2 में Cl इज ऑक्सीडाइज, ओके, तो विल द वैल्यू बी पॉजिटिव? हाँ, Cl is oxidized, you mean reduced, no? Cl is oxidized, will the value be negative? Shlok, isn't Cl being reduced? Yeah. Oh, 2 greater than 1. Yeah. Put in a red line. Okay, not a green line. Red line. ठीक है. A है गलत. So cathode, this is not true. Not true. Okay. Red डाल देते हैं. ठीक है. Thank you. Thank you. 2 greater than 1? No. 2 is not greater than 1. Yeah. I mean, 2 is greater than 1. That's not a good thing. Yeah. Okay. Okay. यहाँ पे एनोड होना चाहिए उल्टा, which is cathode is कौन सा है? 1 is cathode, right? 1 is cathode and 2 is anode. Let me correct that on the other side. Let me correct this. Thank you, thank you, thank you. You guys are amazing. This is slide number 7. I'm quickly going to correct this. Okay, cool. So ये वाला नहीं सही है. What about the next one? What about the next one? B is correct, means reduced. It's oxidized. Is it oxidized from Cl minus Cl2? Yeah, exactly. That's what you'd want. Shlok, perfect. Yeah, you'd want to do that, but that is very, very negative. That is going to be negative 1.36. And that's not positive enough. This is just 0.54. This is, so what you get is 0.54 minus 1.36. That's some negative value. Doesn't work. So ये वाला हो गया गलत. What about this? What about next one? B is correct. B में क्या है?
Fe3 प्लस ये है हमारा 3 and 5, मतलब ये है कैथोड. लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर. सफेद कलर भी, आई डिड नॉट नो दिस. ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, राइट. सो मतलब दिस इज 5, या 5 is anode. Yeah, this one works. I'm going to put a green tick next to this. This is all right. तीसरा वाला क्या करें? B and C is correct. Okay, Rex says C is correct as well. 4 is greater than 1. 4 is greater than 1. Is this correct? 4 कहाँ गया? ये मतलब ये हो रहा है reduce. Let's write that down here. C3 plus. So this is the cathode. This is the anode. Okay, 4 and 1. Yeah, ये भी हो गया सही. What about the last one? What about the last one? Last वाले में है Fe2 plus, again that is 3. This is being oxidized, so this is anode and this is cathode. So Cl minus कौन सा था? 2. So 2 is much greater than 3. 2 is much greater than 3. Okay, so that's not going to work, is it? Cathode. Hey, hold on. What about D? What if it is negative but it still works on top? Fahim. Let me read what Fahim is. Fahim थोड़ा कुछ लंबा लिखा. Wow, great. Seriously, guys, how old are you? Like 6th standard? These are 6th standard jokes. Like, seriously, guys, grow up. All right. I'm also going to report the chap just for the heck of it, because seriously. Which one do I use? What do you guys, harassment or bullying? Let's use that one. And sweet. Yeah, report. There you go. I have to do that so that आगे ये amazing लोग जाके और लोगों को ना irritate करें. Option B and C. Wu Shang is saying enough for JEE main. Sure, bro. Absolutely. Last वाला option क्या है? 2 and 3. Okay. So got distracted there. Fe2 plus Cl minus and Cl. Oh, this is getting oxidized. No, this is the anode. This is cathode. Okay. So ये है anode. Hold on. एक मिनट. कुछ उल्टा लिखा क्या? ये हो रहा है ऑक्सीडाइज, ये भी हो रहा है ऑक्सीडाइज. ये गलत लिख दिया क्या? What about this? Evening, good evening, Tanu. What's happening? छोड़ो यार AJ. Don't worry about all that. एक सेकंड. Let me just check that. Fe2 plus reacts with Cl2. आई? ये कैसे होगा? ऑप्शन 4 तो दोनों ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो लेट्स क्रॉस दिस वन आउट. आई वाज लाइक कुछ तो हमने गड़बड़ लिखा. Fe2 plus reacts with Cl minus to give Cl2 gas. ये तो नहीं होगा because both are being oxidized. Both are being oxidized. I was like कुछ तो मैंने गलत लिखा वहां पे. But then you're like नहीं, हम तो सही लिख रहे थे. So that is why that's correct. But this one is like weird. It doesn't matter. Like this, let's remove this out. So ये definitely incorrect है. Okay, excellent work. I think yeah, exactly right. Slope, that doesn't make any sense. C is right. Yeah, option D गलत है just because both I was like, wait, this is weird. I'm like, how are we comparing? ये तो कुछ अजीब सा लिखा हुआ है. मुझे लगा मैंने कुछ गलत लिखा. But we just wrote down. That's why I asked you to check. जो ऑप्शन लिखा था वो as it is लिख लेते हैं पहले. फिर बाद में देखेंगे सही है गलत है, as it is लिख लेते हैं. We were sure as it is लिखने के बाद कि भाई हो गया है, ठीक है, it's right. But then now we see that it behaves so funnily. Khair, anyway, excellent work everybody. Badhiya, good job. Shall we move on? Hold on, let me come back to this screen. Okay, sweet. So B and C are correct. Excellent work. All right. Option ही गलत था. हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं. चलो, let's take it up a notch. Some standard electrode potentials at 298 Kelvin are given below and 4 values दिए. To a solution containing 0.001. तो वो last वाला was a warm up question for this question. ठीक है, warm up question for this, because in this one you'll have to use Nernst equation थोड़ा सा. मतलब it's similar to the last one. यहाँ पे 4 values हैं. Let me highlight them. And then you got to use Nernst equation. The metal rods X and Y are inserted and connected by a conducting wire, resulted in dissolution of X. मतलब कि X gets, hint दे रहा हूं आपको, oxidized. ठीक है, मतलब it must be the anode. और हिंट देने की जरूरत नहीं है ना, हो गया ना, काफी है ना. करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन से हैं? A, B, C और D है इसमें. ट्राई करिए. Shlok, that's good, dude. Shlok, that's good. It's very takes a bit of effort, but if you sit and dissect that question, it helps you in the long run. Yeah. So there you go. Doesn't make sense. Yeah, that question was done.
सिड, ये वैल्यूज नेगेटिव हैं। कौन सी वैल्यूज? हे तनु, व्हाट्स हैपनिंग? कौन सी क्लास मिस की? यू आर हियर राइट नाउ। Oh, Tanu, are you talking about the NEET class? You missed the NEET class? Oh, that's okay. Oh, that's all right. You can attend this. Although, maybe for NEET, this is going to be a bit much. It's okay. Treat this as 4 NEET के सवाल. They are literally 4 NEET के सवाल का equivalent. Try it out, guys. Do you need a hint in this? Any hint in this? ये values negative है? Sir, oh, I was like Sid. There's a guy called Sid. Yeah, bro. All the values are negative. Let me open up. Oh, Sid. I thought there was a guy called Sid here. Hold on. Let me open up this amazing NCRT here and go back to this. Yeah, we could have made the things a little bit clearer on the options, but here you go. See, I'm just proving to you they're all negative क्योंकि ये सब metals है ना. That's a good way to check. आपका नाम क्या है? युवराज. Yuvraj, the good way to check is metals are going to have a negative value, right? They're all negative values. ठीक है? Let me go back to this question now. Cool. Try it out. अरे वाह तनु, lovely. Try it out. Try it out. निधि saying A. एक चीज बताऊं, एक पते की बात बताऊं निधि, इसमें एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं. MSQ. I forgot to tell you guys. Could be more than one correct. हो सकता है A सही है और भी हो सकता है. तनु ट्राई करो. Try karo. Yeah, dude, overtly underrated. Okay. How do you get that star emoji? That's cool, Nidhi. All right. So Nidhi is confident about A. What about B, C, or D? Do you think वो भी possible है? Maybe more than one could be correct. Yeah, these are negative values, and it's not hyphen. It's a negative value. ठीक है? Put a box around it ताकि it is a bit more evident. Nidhi, aren't fests going on there? A few people from Discord told me and from Telegram कि मोडाई चल रहा है दिल्ली में, Bombay में, and everyone's going there. Aren't you going to Modai? You should go to Modai. The main focus of college life should be to go to Modai at least एक बार in 4 years. If you're not from Bombay, if you're from Bombay, you should go every year. Modai is a beautiful fest. I've heard some great people coming there. कौन आ रहा है? Hold on. Somebody just texted me. Oh, Vipul Goyal. He's a great comedian. Very clean, amazing comedy. He's coming there. A couple of full film stars and stuff. Done. Tanu, सवाल आंसर क्या होगा? निधि क्या हुआ? Retract कर दिया आंसर. So I'm leaving the options on the thing because I guess you're working on this. It's multi-correct. Yes, Nidhi, absolutely. Tanu, what is the answer? What do you think? Is the answer option A? Yuvraj, A could be one of the answers. I'll tell you what we're going to do. Right? Since all of you are saying it's A, let me show you how these guys got to A. I'm sure you already know. But let me give you a thing. Let's compare CD and Nikhil. Could be more than one correct. Could be more. Look at the other options. Looks like we are clear that A is correct. How did they get A is correct? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि this is being oxidized. Okay, this oxidizes. क्यों? क्योंकि dissolution हो रहा है. ठीक है? मतलब ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया कैथोड. Now, if I know that this is the anode and this is the cathode, I can then go ahead and form the expression of Q. Q will be equal to what? It will be anode divided by cathode. Do you follow what I'm saying? Why will Q be anode by cathode? Anode में आपके बनेंगे ions on the RHS. Cathode में ions होंगे LHS में. Okay, please look at this and understand this carefully. Q will be anode by cathode. So I'm going to write Q as CD2 plus by Ni2 plus, which is this concentration. Now, interestingly, in all of the options, Q will always be equal to this. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है. I know मैं बार बार Q और Q बोल रहा हूँ, which can get a little confusing. Apologies for that, was not planned. E कैसे निकालेंगे आप? Same way, you will do cathode minus anode and plus RT by NF, which is 0.06 by 2 log of 100. So for all the options, ये वाला part रहेगा same. Okay, let me write that on the left over here. Same for all options. ध्यान से करो, धीरे धीरे करो.
ऑर्गेनाइज करो अपने थॉट्स को. फॉर जेई एडवांस क्वेश्चंस यू हैव टू डू दैट. आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है. ठीक है. E इज कैथोड माइनस एनोड. इज दिस करेक्ट? कैथोड मतलब निकल, निकल मतलब 0.0 माइनस 0.24. ओके. और एनोड कहाँ था? -0.4. ओके, दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर. प्लस RT by NF log of 100. Why 100? Because this is 10 power minus 1, 10 power minus 3 by 10 power minus 1, that's equal to 10 power minus 2. और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके आपको मिल जाता है सिंपली 100, राइट? log 100 which is log 2. ठीक है? log 100 which is 2. Okay. Sushil is saying B and A. B is correct. Tanu is also saying B, A, B. आपको ऑप्शंस फिर से दिखा देता हूं. ठीक है. This was my logic. Okay. अब ये अगर आप समझ गए हैं, and I'll just go back to the options ताकि आपको ऑप्शन फिर से एक बार दिख जाए. Are you clear on this? Just let me know quickly. Chat में ये लॉजिक समझ में आ रहा है? If you're clear on this, I'll go back to the options so you can see and बाकी A, B, C, D चार ऑप्शन ध्यान से देखेंगे. Are you okay with all of this that I've written over here? ये समझ में आ रहा है? Let me look at what Yuvraj is saying. X is anode, Y is cathode. Yuvraj, it's a little bit more than that. You're on the right track, but ये वैल्यू भी आ रही है. देखो, this value here, this is going to play spoil sport in some options. This basically 2 and log 100 is also 2 gets cancelled out. मतलब this is just plus 0.006. अगर उन दोनों का फर्क 0.006 से ज्यादा है, then you don't have to worry. अगर it is close, then you have to look carefully. So this is positive, yes, spontaneous. This is okay, all right, great. Let me go back to the options now. Okay, I'll write it फिर से यहाँ पे options में लिख देता हूँ कि 0.06 by 2 log 100, which is basically 0.06. Okay, और ये plus sign यहाँ पे है. So you have E cathode minus E anode plus this E cell. Now use this rubric to solve the other options. What do I mean by rubric? मतलब ये मैंने सेटअप कर लिया है और we are sure because of this value of x and y ये भी फिक्स हो गया है. तो अगर E कैथोड और E एनोड के बीच में फर्क 0.06 से ज्यादा है तो सोचने की जरूरत नहीं है, और अगर कम है तो भी सोचने की, बट इट्स क्लोज देन यू हैव टू सॉल्व. तो यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम फिगरिंग दिस पार्ट आउट. दैट्स ऑल. ओके, कूल. लाइक CD and FE, like in CD and FE, but sir it is confusing. तनु, हाँ यार, जे एडवांस के सवाल थोड़े होते हैं, अतरंगी होते हैं. They are a little bit weird. I'm going to be straight with you. They are a little bit weird. Yeah, that's why we're spending some time over here. और देखो, ये हमारा सिर्फ तीसरा ही सवाल है, but I don't mind spending a lot of time on good question. And this is a great question because you will do this carefully. Minimum gap is 0.11. अच्छा, मुझे लगा 0.06. 0.11 आ रहा है क्या minimum gap? What do you mean minimum gap? You're not sure about option B? Okay. Shlok is saying like in CD and FE. Shlok has cracked the case. Okay, like in CD and FE. ठीक है. So there's no need for checking. Minimum gap is 0.11. अच्छा, ठीक है. Cool. No need of checking. ठीक है, ये हो गया. What about this one? CD and FE. CD and FE का हम लोग अगर देखें तो CD हो जाएगा फिर से एनोड, and this is again the cathode, right? So everything here is good. E is going to be this. Oh, बहुत close. Hold on. No bro, काफी CD और FE में तो काफी close है, बहुत close, but still positive. इसको तो चेक करना पड़ेगा युवराज, काफी क्लोज थे. मिनिमम गैप थोड़ी ना 0.11, देखो मिनिमम गैप है 0.04. दिस इज वेरी क्लोज. -0.44 प्लस 0.4. सो दिस इज बेसिकली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मिलता है नेगेटिव कितना मिलता है? 0.04. बहुत क्लोज, वेरी क्लोज, बट स्टिल पॉजिटिव. ओके, इस वाले को चेक करने की जरूरत थी. रेक इज लाइक गिविंग अस द आंसर. ऑसम. ठीक है, ये दोनों हो गए. तीसरा वाला देखते हैं, निकल एंड पीबी. ओके, इसमें भी सेम कहानी है. निकल हो गया आपका एनोड एंड कैथोड, ये. ओके, देन वी हैव डन दिस. दिस इज स्टिल लॉग एंड ऑल ऑफ दैट, एंड दिस इज नॉट इवन क्लोज. दिस इज नॉट नोवेयर क्लोज. तो ए, बी एंड सी तो करेक्ट है ही. डी होगा गलत, क्योंकि देखो ये गैप बहुत ज्यादा है. एज युवराज सेड, द गैप इज टू मच. 0.2 का गैप है, सो इट डजंट मैटर. निकल इज एनोड, ये है कैथोड, और नेगेटिव 0.44, या just is too big for nickel to figure out, and this value is negative, इसलिए spontaneous नहीं होगा. Cool. Okay. Which is annoying because you're like, bro, CD and FE was so close,
बट वो भी पॉजिटिव निकल गया, मतलब उसमें भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी. सो these are right options, A, B and C. Yes, C भी right. Yes, A, B and C are correct. So what is the moral of the story? तनु ठीक है या? मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि जेईई एडवांस सवाल में यू हैव टू फिगर आउट हाउ टू डू द क्वेश्चन. जल्दी में नहीं करना है, एंड यू हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स. दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, बट ध्यान से करना है. यू मस्ट कीप योर ट्रेन ऑफ थॉट, फोकस होना जरूरी है. ओके, फॉर अ जेईई एडवांस क्वेश्चन. ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. एबीसी आ रहा था बट वी आर स्टक. इट्स ओके तनु, हो गया. गुड क्वेश्चन, राइट? लवली क्वेश्चन. सिंपल सा सवाल है बट थोड़ा एफर्ट लगा. ये वाला देखते हैं. थोड़े सा मुश्किल सवाल, फिर सीधे बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल. इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा बताओ? टेल मी व्हाट इज द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस. खतरनाक सवाल था. ओके, कूल. गुड जॉब तनु, गुड जॉब. श्लोक, युवराज, रेक. रेक बहुत देर से शांत रहा, सीधे आंसर दिया है. रेक, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. सुशील, आर यू ओके? बी वाज करेक्ट, ए वाज करेक्ट, सो इज सी. निधि, ए बी सी तीनों करेक्ट थे. शोडाउन भाई, are you here या भाग गए? just quickly looking at the chat. okay, all right, try this one out. yeah, ये तो बहुत डायरेक्ट है ना. ये तो नींद में भी कर सकते हो. बता दो इसका आंसर क्या होगा. C for cats. I don't know. Yeah dude, it should be C. I don't see how it would not be C. I mean, this is very direct, right? ये हो रहा है एनोड में, ये हो रहा है कैथोड में. दैट्स इट ब्रो. सो एनोड एंड कैथोड लिख लो एंड पुट दिस थिंग ओवर हियर. सो एनोड पहले, फिर कैथोड. या डूड, इट हैज टू बी सी. आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स फिट्स. या जस्ट राइटिंग दिस एलिमिनेट्स ऑल द अदर आउट. डायरेक्ट ना, सिंपल. अरे युवराज क्या हुआ? श्लोक, रेक, राइट? युवराज थोड़ा ध्यान से कर यार. देख, ओके, another lesson for all of us. Thanks Yuvraj for that. I'm not messing with you. कुछ सवाल बहुत भारी होंगे. जेईई मेन में भी कुछ सवाल बहुत भारी होंगे. जेईई एडवांस ठीक है, एक झलक देख ली हम लोगों ने. ना ऑल क्वेश्चन आर गोइंग टू बी जेईई मेन लेवल, डोंट वरी. वो था, एक दो आउटलायर्स थे वो. जेईई मेन में भी कुछ सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे, जिसकी वजह से आपका गिव अप हो जाएगा. मैथ्स में ऐसे सवाल होंगे ज्यादातर, केमिस्ट्री में कम होंगे, फिजिक्स में होंगे, मैथ्स में होंगे. गिव अप मत करना है, नहीं करना है. सो टेस्ट टेकिंग की प्रैक्टिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल राइट नाउ. अभी पढ़ाने का टाइम ठीक है, इज गुड, बट टेस्ट टेकिंग इज गुड, व्हिच मींस कि यू हैव टू बी एबल टू गेट बैक इनटू द जोन ऑफ. अगर आसान सवाल है तो उसको चिल करके करना है, टेंशन नहीं करनी है. ठीक है, ऑल राइट. कैथोड पहले नहीं आता? कैथोड पहले आता है क्या? अच्छा, एक बार देख लेते हैं यार. तुमने बोल दिया तो मुझे भी डाउट हो गया. अभी देखते हैं क्या है, एनसीईआरटी दोस्त क्या बोलते हैं. सेल रिप्रेजेंट, सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्या एनसीईआरटी में? अबे नहीं है, डोंट टेल मी. इट हैज टू बी देयर इन एनसीईआरटी. व्हाट? सेल रिप्रेजेंटेशन नॉट इन एनसीईआरटी? चलो सॉल्ट ब्रिज ढूंढते हैं. होना तो चाहिए. वाओ, माय हैंडराइटिंग इज सो अमेजिंग. सॉल्ट ब्रिज, अरे सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज. ओके, सेल रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में नहीं है. ये तो अनर्थ हो गया. I'm gonna look at the chat quickly to see what you guys are saying, but like, bro, really? I was quite sure anode पहले होता है. कैथोड होता है क्या? श्लोक is saying most of my theory and syllabus covered, so attempt 2-3 marks a week. हाँ ठीक है, बढ़िया है भाई, बर्नआउट मत होना. 2-3 marks a week is a lot, bro. It's good if you're able to do it. अगर नहीं समझ आ रहा है तो चिल करो यार. कहाँ है सेल रिप्रेजेंटेशन एनसीईआरटी में? रियली? सॉल्ट ब्रिज कहीं तो था, हल्का सा याद आ रहा है. लेफ्ट और राइट. ये देखो, आ गया आ गया आ गया. पता नहीं, सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज. मैं ढूंढ रहा था शब्द सेल रिप्रेजेंटेशन. देखिए युवराज जी, इट्स ओके यार, इट्स ओके. याद करने में मुश्किल हो जाती है ना कभी कभी, इसलिए एनसीईआरटी खोलो और देख लो, है ना. टेंशन की बात नहीं है. पहले हुआ एनोड, फिर हुआ कैथोड. ठीक है, रिडक्शन, एंड बीच में आ गया सॉल्ट ब्रिज. ओके, कूल. हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके. कभी कभी नहीं याद रहता है, तो मुझे भी याद, आपने बोला था, आई बिलीव यू, आई विल चेक. और क्या. पवन प्रणाम. एनोड होता है. थैंक यू पवन. ओके,
ठीक है, सी है, लवली लवली लवली, गुड जॉब एवरीबॉडी। अगला सवाल करते हैं। कभी कभी फेटिक हो जाता है ना, ज्यादा सवाल करने से फेटिक हो जाता है। चलो एक और क्वेश्चन। At 300 Kelvin, a concentration cell is formed by coupling two copper electrodes immersed in copper sulfate solution. Give the concentration of Cu2 plus in one electrode. Given that the concentration of Cu2 plus one electrode is 100 times than the other. भाई साहब इसको कैसे किया जाए? हैं? एनोड कैथोड कुछ दिया ही नहीं है, 100 टाइम्स बस दिया हुआ है। कैन यू डू दिस? ट्राई इट आउट। लोन, अच्छा श्लोक सेज लोन। हाय निधि, व्हाट्सअप? है एनसीईआरटी में। ओ अच्छा, नॉट हाई, यू आर सेइंग है, सॉरी। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, राइट? दिस बिकॉज़ दैट्स हाउ आई राइट हाई विद एन ए। क्लियर हो गया, ठीक है ठीक है, ऑलराइट। अरे वाह पवन, गुड टाइमिंग। हाँ, अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिकॉर्ड से दिखा है, सही है सही है, गुड गुड दैट यू लाइक्ड इट पवन। ट्राई दिस क्वेश्चन आउट। If you need a hint, let me know. The main hint, according to me, is this beautiful thing right here. Concentration cell. ये शब्द जरूरी है. That is your biggest hint. Okay? Try it out. Lone left oxidation anode. A, ये left. Okay, ठीक है. I won't say anything. This works only for cell representation. ठीक है. Otherwise, left right वाला लोग थोड़ा take it with pinch of salt. ध्यान से करना. इलेक्ट्रोलिसिस और इसमें उल्टा होता है। ई नॉट वैल्यू फॉर कॉपर। श्लोक, श्लोक ट्रैप में पकड़े गए आप। ई नॉट वैल्यू की जरूरत ही नहीं है इसमें। श्लोक, कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट तो 0 होगा। देख लेते हैं, आई कैन प्रूव इट टू यू। देखो, कॉन्सेंट्रेशन सेल मतलब कैथोड is equal to anode. Well, E naught at least. So E naught cell will be equal to 0. समझ में आया श्लोक? क्या? अरे X भाई साहब, she's just moved a house. स्टूडियो थोड़ा सेटअप करने में टाइम लग रहा है। कोई मिसिंग का ऐसे ही मिसिंग कुछ भी यार, वाई फैला हो गया। दिल्ली में स्टूडियो मूव कर गया था तो सेटिंग अप स्टफ। शी इज मूविंग, सॉरी, शी मूव्ड हाउस। मैंने कुछ घर में बदला, कुछ हुआ। And NCERT will repeat 3-4 times 15 days before main exam time. Nidhi has given us the biggest tip that everybody needs to listen very loudly. Nidhi, who is at a very good college, I'm not going to dox her, she's told us where she's at, but please read the NCERT. पूरा छानो NCERT. That should be your last minute exercise वाली चीज। NCERT पढ़ो, डट के पढ़ो। Answer is 0.06. श्लोक, श्लोक ने पकड़ लिया। श्लोक says 0.06 volts. युवराज is also agreeing with श्लोक। पवन बोल रहे हैं C. Okay. Ayush is saying hello. Hello Ayush. Yuvraj is saying n is equal to 2. I like that. Yuvraj, n is equal to 2. And that's why things get cancelled out. Good one Yuvraj. Exactly जो मैंने भी इसी तरीके से किया। E cell is simply this value. By 2 log 100. Log 100 is 2. Cancel out. आंसर हो गया 0.06 वोल्ट्स। कैन यू टेल मी ये पॉइंट क्या 2 ऑप्शन सही है? तनु, तनु आई सी, क्या आपने जल्दी में किया? आपने ये डिनोमिनेटर में 2 आप भूल गए। लेट मी राइट द पूरा इक्वेशन डाउन, अगर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। E is equal to E naught minus RT by NF into 2.303 log Q। ठीक है, ओके। Now n here is 2 and RT by NF into 2.303 मैंने लिया है to be 0.06। F as usual is 96,500। Since ये revision session है इसलिए मैं प्यार से आपको सब चीज बता रहा हूँ। Okay, there is no problem in repeating all of these things. Basics हैं, जरूरी है। टेम्परेचर हम लोग ले लेते हैं 300 केल्विन, वो तो दिया ही हुआ। ये सब मल्टीप्लाई करो, you can take this to be 0.06। तनु, maybe you forgot this 2 ये somewhere over here, right? If you forget this 2 then ये cancel नहीं होता है, 0.12 मिल सकता है आपको। A is the right answer. No, yeah, X. All right. श्लोक, जिसकी concentration low is oxidized. कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, शब्द की वजह से कॉम्प्लिकेटेड है। श्लोक, एब्सोल्युटली राइट। नाउ
ये 100 टाइम्स ज्यादा, जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज पूछना चाहता था आपसे, ये 100 टाइम्स ज्यादा का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज कैथोड, व्हाट इज एनोड? देखो ये Q जो है हमारा -0.06 log Q आ जाएगा बाई 2, राइट? Q क्या होता है? Q इज एनोड बाई कैथोड। इसका मतलब हुआ कि कैथोड कॉन्सेंट्रेशन इज 100 टाइम्स ऑफ एनोड। डू यू गाइज अग्री? बहुत जरूरी है ये थियोरी, छोटी सी थियोरी जो यहां पे नीचे लिखी है। डू यू गाइज अग्री विद दिस? Cathode concentration has to be higher than anode concentration in a concentration cell. तभी रिएक्शन होगा spontaneous. Do you agree with that statement? If you don't, that's okay. I will explain why. But मेरे हिसाब से ये maths should tell you the story. देखो ये negative log Q लिखा है. To make it a positive value, to make it positive log, it will become 1 by Q. अब 1 by Q क्या है? 1 by Q is cathode by anode, right? And ये तभी पॉजिटिव होगा अगर दिस इज गोइंग टू बी 100 टाइम्स एनोड बाय एनोड। उसको एनोड कैंसिल हो गया, 100 हो गया। दैट्स ऑल, दैट इज द लॉजिक। यस, लवली, गुड, युवराज, श्लोक एंड रेक। तनु, आई होप यू आल्सो अंडरस्टूड दिस। लवली। अगला सवाल। टाइम अप हो रहा है क्या? 2 ही 3 सवाल हैं। अरे इन फैक्टर मैंने लिख दिया है, ठीक है, लिख दिया है तो आंसर और आसान हो जाएगा। 2 3 सवाल, अरे सवाल बचे हैं मेरे पास, 3 सवाल और बचे हैं। 1 2 3 4 सवाल बचे हैं। You guys want to spend maybe 15-20 more minutes and finish this off? क्या लग रहा है? 15-20 मिनट और लगा ले, 3-4 सवाल बाकी हैं। और if you want, I can give you one question as a homework, जैसा तुम लोग चाहो। Try this out. This is a lovely question though. Lovely question. ए वाला कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद जैसा मूड हो, we will do. An acidic solution of dichromate is electrolyzed for 8 minutes using 2 ampere current as per the following equation. Okay. The amount of chromium 3 plus obtained was 1.104 grams. The efficiency of the process in percentage is what? 30 minutes more is possible. Shlok is lovely, but ठीक है, let's see. I will order food in parallel. तुम लोग करो। Efficiency कैसे निकालोगे? यार efficiency किसी की भी ना is what you have, which is actual by expected, right? So actual तो आपको दिया हुआ है 0.104. Expected क्या होगा? You figure out from Faraday's laws. Faraday भाई साहब के लॉज लगाइए, निकालिए। 2 ऑप्शन ठीक लगते हैं। तनु, उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ये न्यूमेरिकल एंट्री वाला सवाल है तनु। 2 ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। अच्छा, पिछले वाले में, हाँ हाँ, वो तो है, वो तो सवाल में ऐसे होते हैं ऑप्शन। या ट्राई दिस आउट। ऑलराइट रक्षिता, गुड टू गेट योर इनपुट। आउटपुट बाय इनपुट इन फिजिक्स, हाँ सेम है पवन, सेम चीज हियर। मतलब जो थियोरेटिकल, एक्चुअल आउटपुट बाय थियोरेटिकल आउटपुट, ये भी बोल सकते हो एफिशिएंसी, राइट, इनटू 100। निधि को आंसर सीधे याद है। अरे वाह निधि, निधि आपके, वाज दिस फ्रॉम योर ईयर? हो सकता है 2023 का सवाल था। दैट्स अ पॉसिबिलिटी, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। आई डोंट रिमेंबर जेई मेन का था या जेई एडवांस का था। खैर, ट्राई करो। गुड जॉब निधि। डू यू वांट टू टेल दीस गाइस हाउ यू डिड इट? कैसे किया आपने? n factor 3 क्यों चाहिए? Because when you use this amazing equation m equal to zit, z क्या है? Z is the molar mass divided by n factor into 96,500, है ना? इसीलिए आपको चाहिए। बट ये 96,000 आप लोग ले सकते हैं, you don't have to take 96,500. Actually ध्यान रखो, use this, don't use 96,500. फर्स्ट ईयर CS, हाँ इसलिए तो पूछ रहा हूं। लास्ट ईयर 2023 में आपने पेपर दिया था ना, तो ये वाला जो है सवाल पेपर, ये वाला जो है 2023 का था ना। एंड नो फेस्ट गोइंग ऑन, दिल्ली में फेस्ट नहीं है क्या? नहीं, कॉलेज नहीं पूछ रहा था, कॉलेज तो आपने बताया था। 60% आ रहा है युवराज, सही है। निधि और युवराज ने बहुत जल्दी कर दिया, सही है सही है सही है। एनीबडी एल्स वांट्स टू टेक अ शॉट एट इट? Oh, that's lovely, bro. Pawan, that's good to know. Pawan, I am available on I Teach Chem
not Instagram. What about? Wow, not Instagram. I mean Telegram, bro. Ugh, Instagram, no, definitely not Instagram. Telegram and not Discord. You can ping me there and I can help you out. I can guide you in the right direction. Yeah, and there are some nice free Discord communities, not owned by Aakash Byju's, but just free things that people ask doubts on. You can do that. And I think Aakash also has a lot of doubts on chat and stuff like that. You can check her out. Yeah, on Telegram and Discord. You can ping me here. I'll try and help you in the best possible way. और कोई आंसर दे रहा है? पवन जी, आर यू ट्राइंग दिस क्वेश्चन? जेई मेन के क्वेश्चन है ये. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी बहुत बार सॉल्व किए थे. निधि, गिविंग अस पर्ल्स ऑफ विजडम. एनसीईआरटी करो. दूसरी बात, पीवाईक्यूज करो. M equal to ZIT में मैंने लिखा मोलर मास 52, 96,300. दिस इज N factor, this is F. 8 into 2 into 60. Please don't forget this 60 because I'm converting minute to seconds, right? ऐसा यूनिट है भाई, सेकेंड, मिनट नहीं है. ठीक है, you need to do that. After this, everything gets cancelled out and life is beautiful. 9 and 6 adds up, gives you 15, मतलब is divisible by 3. 6 is here, ये हट जाता है, कट जाता है, सब चीजें कट जाती है. What you're left with is this beautiful thing, which is just 52 into, नहीं, सब कुछ कैंसिल होगा क्या? Just 52 by 3. नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. 52 by 300, not 52 by 3, 52 by 300, right? 52 by 300 हो गया. Now, that efficiency will simply be 1.104 divided by 52, 300, blah, blah, blah. ठीक है? Cool, which is 60%. ये तो बस हो गया दो बार ना, 0.02. एक और जीरो हो गया, 0.002. Okay, yeah. And 300 मतलब becomes 0.2 again. 0.2 into 100 into 3 is 60%. ठीक है? All right, let's move on. 61 कैसे है पवन? अच्छा, but good job पवन. तनु, lovely. युवराज, निधि, thank you for your efforts. All right, अगला सवाल. On electrolysis of dilute H2SO4 with platinum electrodes, the amount of substance liberated at the cathode and anode are in the ratio. Try करिए. रेक कैसे यार तुम लोग को? ओके, देखो, I wasn't going to bug you guys about this, but in this question you will get exactly 60%. You will not get point and all. क्यों? क्योंकि बोला है सवाल में use F value as 96,000, not 96,500. ठीक है? इसीलिए exactly 64 आएगा. Sorry, 60% आएगा. Yeah, you will not get 61, 60.4 or whatever. Exactly 60 आएगा. ध्यान से देखना. Try the next question out, guys. ये वाला try करो. इसमें बस एक छोटी चीज है फिगर आउट करना. Once you have that, the question is very easy. Without that, you're like, bro, how do I even start this? But that छोटी वाली basic चीज is there in NCERT. Okay, you do that and after that is very doable. रेक मैंने भी यही किया था. When I was solving the question, I was like, bro, ये क्या है? इतने कैसे complicated numbers? Then I saw, दो बार देखा, अरे यार, सवाल हुआ 96,600 यूज कर लो ना यार, इतना कौन टेंशन लेना है? 96,000, sorry, not even 600, just 96,000. Yeah. I did the same thing when I was solving it. So then I started like, no, ये सब जरूरत नहीं है. Cool. Then you get 59 point something, no, 58 or whatever. Here. Yeah, try this out. Please try this question out. While I order the next set of things खाने के लिए. I've ordered one thing, I'm ordering other things now. So, what is that small thing? Shlok. Lovely Shlok. Amazing. Do you guys agree with what Shlok is saying? You know why I'm so glad? Because that's the only thing that is a challenge in this question. ठीक है? ये है overall reaction. That's all यार. ये है overall reaction. So this becomes a theoretical question now. This is not even a numerical. This is a theoretical question. Because for the electrolysis of water, you need a little bit of acid, little bit of base. Little bit of acid मतलब diluted H2SO4, मतलब पानी ही electrolyze हो रहा है. That's all. That's all. Pawan is saying A. Good job, Pawan. और कैथोड एनोड का हो तो लिख ही लो. ये हो गया कैथोड, ये हो गया एनोड, है ना? ठीक है. You solve this in PYQ, that's good, that's good. But you must know how we got that. That's all right. अगर आपने पहले solve किया है तो that's wonderful. But the theory that you need to know is this part right here, right? Theory का main aspect है कि boss, you need to be able to identify कि this is just
electrolysis of water, what Shlok said in detail. Okay. So from here, what do? You say कि अच्छा इसके निकल रहे हैं 2 मोल is to 1 मोल, मतलब 2 ग्राम is to 32 ग्राम. Is that correct? नहीं 2 नहीं, sorry, 4 ग्राम is to 32. देखो जल्दी में गड़बड़ी हो जाती है. 2 मोल मतलब कि 4 ग्राम मोल, right? And then you cancel it out. 1 is to 8. Khatam. A. Yes, Yuvraj. Exactly. That's it. Right? That's great, Pawan. That's lovely. All the best, Pawan. And says you can ping me on I Teach Chem. I'll try and help you out, do it the best possible. I'll guide you towards the right resources for sure. The Baidu side, the topper side, they have answers to every question you could ask. If you have theoretical doubts, feel free to ping me. I'll help you out for sure. All right. एक और है. I'll take this one as the homework because we are, time का concern. अरे नहीं यार, ये बहुत सही सवाल है. I want to do this one. I really want to do this one. Okay, let's do this one. I'll give you another one as homework. Let's do this one. इसके बाद एक और पक्का. One more after this. If the aqueous solutions of the following salts, blah, 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 hafnium. Oh, hafnium. That's scary. Okay. Are electrolyzed for 1 hour, 4 minutes and 20 seconds with weird number, 10 ampere current. Which solution will deposit the maximum mass of the metal at cathode? Also, what mass is deposited at the metal of the metal? You're like, hey, एक मिनट, JEE में तो ये सब नहीं आता है. JEE में 2 चीजें नहीं पूछी जाती है. Okay, यार, chill है. Answer this question. It's a wonderful question. You got to do 2 things. Identify कौन सा जो है सबसे पहले not सबसे पहले, which of these has the highest mass and what is that mass? यही करना है. ठीक है? Tell me if you need a hint on this one. हाँ, श्लोक partial answer दे दिया श्लोक ने. श्लोक आगे बढ़िए. What is the mass of metal deposited? कितना निकल रहा है बताइए, कितना मेटल निकल रहा है? So now in this question, because rest all are constants, lower the value of n factor, highest the mass deposited. Excellent, Yuvraj. That's exactly how it works. That's exactly how this works. Yeah, perfect. Yeah, so this whole thing, yeah, great. So hafnium was just one of those distractors. डरो मत, हाफनियम से डरो मत, Fe से, जिंक से. n फैक्टर सबसे कम है Ag का, तो लार्जेस्ट Z, मोस्ट मास, एंड इन दैट केस you're right, n factor जिसका सबसे कम हुआ उसका मास होगा सबसे ज्यादा. So out of all of these, it is very clear that this will have the highest mass. But you'll have to go in a little bit of detail, huh? Yuvraj, it is not just that. Z is molar mass by N. And the thing is, because hafnium 178 है, तो थोड़ा सा effort लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा effort. But it turns out कि आपका scam worked out nicely. Not 25, ये क्या लिख दिया? 2F होना चाहिए, sorry. What? What is 25, bro? Okay. So it's Z that you have to get, molar mass by N. So now that we've done that, आगे क्या करें? Shoot, I did not do the payment of that food thing. Anyway, I will do that. But tell me this. Shlok, on fire. Do you guys agree with Shlok? Shlok says 43.2 gram. What do the rest of you guys think? कर सकते हो इसके बाद, और डायरेक्ट ही है ना, not very complicated इसके बाद. What do you guys think about this one? कैसे करोगे आगे? Just simple, right? Mass is what? This same thing. ये पूरा हमने किया. ये क्या है? This is Z, right? This is I and this is T. How is this T? This is 3600 for 1 hour plus 4 minute का 240 plus 20. That gives you a nice and even 683860. And you'll notice there's something special about 3860. What is special about 3860?
नो श्लोक, इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तनु, दिस इज अ टेबल. मतलब तनु, आपकी बात मैं समझा नहीं. This I'm just comparing, Tanu. I'm just comparing Z values. All of these are Z values of all of these metals. Okay? यही है बस. Cool. युवराज, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. This is why I put this weird number. Look at this. कैलकुलेशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत प्यारा है. देखो. And this is something that comes with a bit of time. You will realize कि 96,500 is divisible by 193. Okay. And you're like, what the hell does that mean? What do you do? What is divisible by 193? 193 is a prime number. Okay, it's divisible by 5. You divide this by 5, you get 193. Okay. So that's the scam. So you divide it by 5, you get 193. And that you don't have to remember, but if you do a lot of questions, आपको याद हो ही जाता है. And trust me, this is not, I don't remember anything in life. Okay. मुझे बस चीजें मतलब ऐसे ही कर पाता हूँ. Because I've done it like a lot of times. So 193 5 times and ये goes 2 times and then you get a straightforward nice number, right? 43.2 gram. Absolutely. ठीक है? Yes, Tanu, AgNO3 is the right answer. Class 12 का है ना electrochemistry? Yes, Pawan भाई साहब, class 12 का है. Absolutely right. ठीक है? तो this is not that complicated. After you did this basic वाला calculation, इतना complicated नहीं था. What do you think? Any doubts, guys? Please let me know. Order placed. I'm ordering for my dad too, so please bear with me. थोड़ा सेशन लंबा चल गया इसीलिए. And okay, I'm done ordering. क्या ये? अरे हाँ, ये चीज पता थी पर क्लिक नहीं हुई. Very nice question. Thank you, Nidhi. Thank you very much. Yuvraj, okay. Pawan, yes, class 12 में electrochemistry. Okay, awesome. थंबनेल में 11 लिखा था. पवन, थैंक्स बॉस. थंबनेल तो करेक्ट कराना पड़ेगा. थंबनेल में 11 लिखा था. 11th में क्यों लिखा था यार थंबनेल में? But thank you. I love the attention to detail. Whether it is on these questions or also on something very straightforward like भाई थंबनेल में 11 तो नहीं लिखना होना चाहिए था. I will tell my team to correct it. Thank you boss. Thanks a lot. Okay, cool. अगला सवाल देखा जाए. Last question. I swear, I've already taken a lot of your time. Last सवाल देख लेते हैं. एक सवाल. ठीक है? इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बट दिस इज व्हाट अ जेईई एडवांस क्वेश्चन वुड लुक लाइक. है ना? ओके ओके. एक सीधा साधा सवाल कर लेते हैं. देन वील डू वन मोर क्वेश्चन. 1+1. दोनों सीधे साधा ही हैं. ये वाला करो. कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन व्हाटएवर रेगुलर यूनिट्स. सेंटीमीटर स्क्वायर है, चिल है. 1 मोलर aqueous diprotic acid solution if its conductivity value is given to me. डाइप्रोटिक है. ध्यान से करना इसको ट्राई. प्लीज ट्राई दिस. इज दिस एडवांस क्वेश्चन? नहीं युवराज, कौन सा? Why are you talking in Kannada, Pawan? It's an advanced question, matlab, it could be, right? It's not a PYQ, that's what you're asking me. But I think this is how an advanced question would be like. तनु, कौन सा दोबारा बताओ? तनु, फिर से बताओ. Which one? पिछला वाला? Okay. Cool. So, Tanu, did you follow till here? यहां तक ठीक था कि कैसे Ag is the maximum mass? Because largest mass would be largest Z value because I into C same है, right? M equal to ZIT होगा, right? अगर सबसे बड़ा वैल्यू Z की, most mass deposited. What is Z? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है. एक बार एनसीईआरटी खोल के दिखाया जाए क्या? रुको. Z मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, राइट? Let us go to Faraday's laws. Faraday. Yeah, it's Faraday. I know. Saturdays are like this for me, bro. Faraday. Michael Faraday. Michael Learns to Rock. A really good band. Wait, I blanked out. What were we talking about? Pawan, I understand Kannada. I've lived here like 25 years, bro.
n फैक्टर से डिवाइड करेंगे. यस श्लोक, होल्ड ऑन. यस, लैम्डा इक्विवेलेंट के n फैक्टर से डिवाइड करेंगे. I blanked out. What are you asking me? दोबारा बता दो. तनु was saying, अच्छा Z हम लोग ढूंढ रहे थे. Z, Faraday's laws, products of electrolysis. Faraday's laws कहाँ गए? Faraday's first law, second law, electrochemical equivalent. Is it there in NCERT somewhere? Faraday इधर दिया है, Z की वैल्यू नहीं दी है. खैर, let's take it to a statement of fact for now. ठीक है. I have taught this in detail. If you want to check out my session, you can. अभी के लिए general idea is Faraday's law said that the mass is proportional to the current, to the charge actually. Okay, and the proportionality constant is equal to Z, which is because देखो, okay, let me explain this. Okay, 1 mole of current कितना mass deposit करेगा? That is what you're trying to get at. 1 mole of current कितना mass deposit करेगा? Now for copper, the mass will be 65 by 2. Why 65 by 2? Because 1 mole is 65, but it forms Cu2 plus ion. अगर Cu2 plus form कर रहा है यार, it is given here. Copper तो नहीं इधर, but whatever it is. Copper छोड़ो, ठीक है. Fe3 plus 6, right? This is 56 by 3. अरे यहाँ पे 2 लिख दिया है. Wonderful math, wonderful math. यहाँ पे होना चाहिए 3. ठीक है. So in this case, in case of Fe3 plus, 3 moles of electrons would give you 1 mole of Fe to get deposited. So that's the focus, that's the Faraday's law itself. Okay, इसलिए Z की वैल्यू है the molar mass divided by n factor. वो n factor इसलिए होता है क्योंकि एक मोल में n मोल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 96,500. why? Because 1 mole of electrons is 96,500. अभी इतना जो है हमारे पास कितना चार्ज दिया है? It's just 10 amperes into this. Okay, so 10 into this divided by 96,500 will give you the actual amount. ठीक है. Tanu, are you okay? Hey, diamonds, likewise, bro. Pavan, will I get cancelled for saying Kannada Gotilla? I have very good Kannada accent. Like, what do you want me to say? Is this okay, Tanu? Tanu? And ये वाले का आंसर तो बताओ, बाकी लोग इसका आंसर बताओ. Okay, ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು. That's better, right? Saying Kannada Gotilla is quite shameless after being here for 25 years. But yeah, I watched Mungaru Male in Suratkal in the amphitheater. That was a very crazy experience because it was Sonu Nigam, right? He sang the songs for this. So that was my first Kannada movie that I saw in a big screen. It was awesome. I've also seen Lucia. That's a great movie. इसका आंसर क्या है? Rec is saying 250. Okay, Rec, lovely. How do you solve this question? Lambda equivalent is kappa times 1000 by n. N क्या है? N क्या है? Hold on. Yeah, dude. Of course I know Kannada, Rakshita. N is normality. Yeah? Which is n factor into molarity. How do you remember this? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. N comes after M. So normality is greater than molarity. That's why I remember it. Okay. Now, normality is going to be equal to 2. Just do this, यार. क्या है इसमें? कुछ नहीं है. 250 हो गया ना, खत्म. ठीक है? I know enough Kannada for just make conversation and stuff. I can't teach in Kannada. If you're going to expect me to start a Kannada channel or something, you don't say things like that. अगला सवाल, ठीक है? अगला सवाल. Last सवाल for the day. You have full length test, Shwetan, on 22nd. All the best. You're also from Karnataka, Rakshita? That's lovely. You're from North Karnataka, I guess, right? Rakshita? Tanu, done? Okay, great. 250. Yes, sir, you have FTS. Okay, great. ये वाला सवाल करते हैं. Calculate lambda naught of HNO3 and HOAC using all of this. अरे ये तो simple निकल गया. ठीक है, चलो कर लो. I want you to give me the answer as a sum of both of these. This is just lambda naught M. Okay, not equivalent. Equivalent last वाले में था. This is just molar conductivity. ठीक है? This is molar conductivity. Although it doesn't matter. All of these are single this thing. Haryanvi, मतलब Haryanvi is a lot like Marwadi, right? Tanu? I have friends who have very good friend Rahul Busla, very nice guy. I know Haryanvi is supposed to be like a rashes kind of thing, but Rahul is the nicest chap I know, like one of the nicest people I know. So yeah, I've heard him speak in that accent. It's fun. ये वाला try करो. How do you do this infinite dilution वाली चीज? देखो, HNO3 directly
आपको नहीं दिया हुआ है, KNO3 दिया है, HCl दिया है, NaCl दिया है और KCl दिया है. Use all of these four to get HNO3. Okay, all of these will give you HNO3. अगला कलर यूज किया जाए. What color shall I use? Let's use a green over here. For what? HOAC. I need this. For HOAC, I need this. I need this. And since I've got this, I need this, and I need. हाँ बस इन तीनों से हो जाना चाहिए, right? From these three, and I need HOAC. HOAC. एक मिनट. हाँ, from these three, I should be able to get this. In fact, for HNO3 also, I don't think I need NaCl. I don't think I need NaCl. Yeah. I need this, this, and this. ठीक है, बता दो. Add them all together. Pawan, Mysore is brilliant. I went there long back, but I saw the वो laser show होता था ना वृंदावन गार्डन में. It was beautiful. It was amazing. The KRS Dam and all. And I think I also went there to the palace दशहरा के समय में. Long back, long back. Neighbors, what's up, what's up, what's up? Hey, King fan. NBTS की तनु क्या बोल रहे हैं आप सर? फर्स्ट NBTS तो केवल NCERT. What is NBTS? I don't know. I don't follow that. Pranam Muditya. Muditya, is that like a real name or what? Yuvraj and Shlok giving me two answers. दोनों अलग थोड़ा सा. King fan, thank you. HCl plus NaAC minus NaCl. दशहरा टाइम बहुत बढ़िया होता है. Rek and Yuvraj are giving me the same answer. Shlok, do you want to check the answer or are you sure about it? अभय knows हरियाणवी. सही है भाई, बहुत अलग अलग टाइम पास हो रहा है सैटरडे को. सही है अभय सर, थोड़ा सवाल भी कर लो यार. I like that you are active on the chat, but I would be really really happy if you did the question. निधि 390.7 किस चीज का है? उसका HNO3 का क्या हो सकता है? हो सकता है. अरे चिल है यार तनु. It's all fun and games. Let's all be respectful. ट्राई करते हैं, सवाल ट्राई करते हैं. रियल नेम. अच्छा, great Muditya. Lovely, lovely. You're in MTech, you're doing MTech or you aspire to do MTech? Hello friends. मनवेंद्र सिंह has entered the chat. आंसर दे दो. श्लोक भी बोल रहे हैं 812. चलो, at this let us close this session. देखो HNO3 क्या हो रहा है? You're adding 3 and 4. 3 कौन सा है? 1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है. So 3 and 4 को add कर रहे हैं आप. If you're adding both of these, I've added H and but I have to subtract K and I have to subtract Cl. So K यहाँ पे है और ये यहाँ पे है ना? नहीं, sorry, KCl दोनों यहाँ पे. So that's why I'm subtracting just 1. So 3 and 4 minus 1. What about HOAC? Similarly, 3 and 5 add करना है, 2 subtract करना है because Na और Cl हट जाएंगे, which I do not want. Okay, when you do all of this jugglery, you get 390.7 for HNO3 as Nidhi pointed out. No, hold on. 390.7 for HOAC and इसका निकलता है 421.3. You add them together, you get a nice number 812. ठीक है. अच्छा, NCERT बूस्टर टेस्ट सीरीज. वाह तनु, वाह तनु, वाह. ये सब तो हमने सुना ही नहीं है लाइफ में. आई एम वेरी न्यू टू दिस, क्या बोलते हैं, आई एम ओल्ड to this coaching scene, but I'm also very new to it. What I mean to say is I've been teaching since 2012, but since 2016 I've been making videos. 2015 I've only been making videos. तो 2015 के बाद जो हुआ है कोचिंग सिनारियो में, ये सब नए नए शब्द मुझे थोड़ा टाइम लगता है समझने में. लाइक NBTS, वाह 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 वाह. ठीक है, चलो, ग्रेट टू बी टीचिंग ऑल ऑफ यू. दैट्स ऑल आई हैड फॉर यू टुडे. आई नो सपोज टू गिव, मैं सोचा कि कुछ दे दूं आपको होमवर्क, पर चला है सब सवाल यहीं पे हम लोग कर लिए. चलो ठीक है. मनवेंद्र, इंग्लिश मैंने सीखी है पूरी टीवी शोज देख के, टीवी शोज और मूवीज देख के, बट आई एम पार्शली किडिंग. वो एक्सेंट के लिए बस हुआ है, बट एक्चुअली इंग्लिश सीखी मैंने हिंदू पेपर, द हिंदू पढ़ के, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ के, और बोलचाल वाली इंग्लिश सीखी है टीवी शोज और मूवीज. टीवी शो कॉल्ड लॉस्ट, फ्रेंड्स और ऐसे ही 2-3 शोज. ठीक है, चलो, आई एम डन विद टुडेज सेशन. बहुत अच्छा हुआ आप लोगों के साथ. होमवर्क यार नहीं है युवराज, सारे सवाल आप ही को दे. रुको, ढूंढने दो, कुछ होमवर्क है क्या? ढूंढने दो यार. I've exhausted all my questions, but because युवराज बोल रहे हैं, एक और सवाल दे रहा हूं आपको. Here you go. ये अतरंगी सवाल है. ठीक है, hold on, let me arrange the options. I thought I will discuss with you, but इसमें बहुत टाइम लग रहा था समझाने में, तो like okay, चलो उसको होमवर्क में ही दे देते हैं. Here it is.
दिख रहा है क्या आपको? शायद अभी नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट। डिलीट एंड कीप, अनहाइड, स्लाइड। अभी दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या अभी? अभी भी नहीं दिख रहा, रुको, अभी दिख रहा है? या दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। कूल, ऑलराइट, थैंक्स युवराज फॉर द सपोर्ट एज ऑलवेज एंड एवरीबडी एल्स। ठीक है, हैव फन एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर या ब्रूसली। ब्रूसली वाली मूवी मैंने हॉल में देखी थी, एंटर द ड्रैगन, दैट वाज गुड फन टू। अबे मेरा इंस्टा आईडी ले ले, अंडरकवर नर्ड 0। क्या यार तुम लोग पढ़ाई के लिए तो टाइम पास ले आते हो भाई। फोकस फोकस, अभय फोकस। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, टेक केयर एंड प्लीज बी रिस्पेक्टफुल ऑन द इंटरनेट. It is a free and safe space, and I want you to respect that, everybody here. ठीक है? As always, we are going to do something very interesting, by the way. In the next few days, हम लोग, I know some of you have explored the wonderful world of the Aakash Baidu app, but if you haven't, I'm giving you a bit of a spoiler. हो सकता है कि हम लोग कुछ interesting चीजें करें on the app very soon. खैर, in the link of this, in the description of this video, all the links are there that you need, including mock tests and stuff that you have asked for. ठीक है, हम लोग अगली बार मिलेंगे ट्यूसडे को, और चैट में कुछ लोग बहुत चीजें बोल रहे हैं, I'm going to quickly look at that and I'm going to close the session. ठीक है, चलो, all right, bye all, good night, tata, have a great time, yeah, see you, bye bye, tata, thanks all for your time.